gestures, our guests, our benefactors have arrived. They are being escorted by Head Boy Gautam Gupta, Head Girl Gulshan Kaur Garewal, our Staff Secretary Mrs. Simranjit and Mrs. Charanjit Kaur. Kindly give a huge round of applause. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। Our prayer dance group to lead us into prayer and witness the display of devotion. सभी रिलीजियंस, सभी सोसाइटीज, सभी कास्ट, सब क्रीड को फॉलो करना होता है और वो धर्म दो नहीं हो सकते, धर्म एक ही हो सकता है। इस किट के जरिए हमारे प्यारे दोस्त ये संदेश देने वाले हैं कि माँ बाप का सम्मान सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। तो देर किस बात की, आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे परफॉर्मर्स का स्वागत करें। जो हर पल मेरे बड़े सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो, वो हरदम साथ हो। जो हर पल मेरे बड़े सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो, वो हरदम साथ हो। पत्ती डाली डाली सी
घर पर चला जाता या वहां पानी पी लेता तो उसको कत्ल कर दिया जाता या मार दिया जाता। लेकिन मोहम्मद साहब ने इन सब चीजों को खत्म करके एक मिशन पर लेकर के आए। ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आज सम्मेलन उन्हीं की नाम से है, उन्हीं की पैदाइश की वजह से आज। So dear audience, get ready to witness a mesmerizing and a soulful performance that will fill this hall with serenity and divine energy. Please welcome our talented performers for the Sufi dance. जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, थोड़ा वही वही आया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, थोड़ा वही वही आया। ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਅਵਹਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇहद ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਭਲੇ ਕੇ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਮੇਟ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਖ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ वाला देश। किया और परमात्मा के ऊपर हाथ रखकर बोला, हे सर्वपिता परमात्मा, ये लोग अनजान है, अज्ञानी है, नादान है, इनको क्षमा करना। समझना चाहिए उन्होंने कितनी शांति हमारे सामने थी। इसी तरह भगवान महावीर स्वामी जब जंगलों में साधना कर रहे खुशी, प्यार और शांति का संदेश लेके आया। प्रभु यीशु इस दुनिया ते क्यों आए? पिता परमेश्वर ने संसार दे नाल इन्ना प्यार किया, उन्हें अपना इको एक पुत्र इस दुनिया ते भेजा। जिस किसी ने भी उस उत्ते विश्वास किया वो बचाया गया। वो बेटा है प्रभु यीशु मसीह। The Son, and shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Highest. Then Mary said to angel, How can this be, since I do not know a man? and the angel said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Mary said to angel, Behold, I am the servant of the Lord.
let it be to me according to your word. And the angel departed. जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। So please give a huge welcome with a thunderous round of claps, because we are going to present before you Bhangra, Bhangra, Bhangra. Special note of gratitude for our dear teachers, whose careful planning, commitment, and tireless efforts behind the scenes made every performance a success. We also thank our non-teaching staff for their creativity and bringing true spirit of Christmas celebration. A heartfelt appreciation goes to our dear students who performed with great enthusiasm, discipline, and made this stage very alive. Finally, to everyone who contributed directly or indirectly, big or small, to today's success of program, we extend our sincere thanks. May the message of Christmas fill our hearts with joy, peace, and renewed hope. May the spirit of Sarv Dharam Sammelan inspire us to live together in harmony, respect.